Hi guys, welcome back to Logri. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करेंगे CLAT 2024 के बारे में. Today we are going to talk about CLAT 2024. So I am going to answer almost every question with regard to CLAT 2024 for you. This video is going to be in Hindi as well as English, like Hindi and English का mix, so that anyone and everybody should hear to this video because this is very important. So let me give you a list of questions. All questions are going to be answered with regard to CLAT 2024. So I have a list of questions with me. We're going to pick those questions one by one and I'm going to answer those questions in detail. The very first question is going to be which stream is the best if you want to prepare for CLAT. कौन सी stream है जो आपको जिसके लिए जाना चाहिए? Is coaching necessary for CLAT? Mandatory for CLAT? When should I start studying for CLAT 2024? When is the exam of CLAT 2024 going to happen? Then which other exam you should give? Can you prepare for other exams as well as CLAT? Can you prepare for CLAT alongside school or you should take a drop? How is CLAT question paper? About the paper, pattern of the exam, marks distribution, syllabus, books, from where to begin? When should I start reading the newspaper? Everything I've talked about in this video. ठीक है, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे. चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं जल्दी से. वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन पे भी हिट कर देना. Yeah guys, welcome to Logiri. I hope you're subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLogiri. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. So number one question, which stream is the best for CLAT preparation? Which stream is the best? कौन सी stream है जो best है CLAT preparation के लिए? देखिए, it was not about the stream. We're going to discuss about the streams also, but one thing that I want from you is एक चीज जो मुझे चाहिए वो है a stream that can give you time for CLAT preparation. How much time? How much time? Question should be how much time? So I need minimum 3 hours. Minimum 3 hours. इतना तो देना ही पड़ेगा. This much I need. If it can go up to 4 hours, it would be great. If it can go up to 5 hours, that would be the maximum time. So minimum 3 hours, maximum 5 hours. This I need from you every day. Har roz. Every day for CLAT self-study. Now when I say self-study, यहाँ पर self-study means coaching time is not included. If you are saying that if you're considering to take CLAT coaching or anything of that sort, you're saying I am going to coaching for 2 hours and then I come back home and study for 1 hour. No, this is not the scenario. Complete 3 hours for self-study. Otherwise, whatever you are doing, you're doing. I'm not concerned with that. Okay, 5 to 6 hours on weekends. Now I need 5 to 6 hours on weekend because we have to revise. There's monthly current affairs, magazines जो हमें पढ़ने होते हैं, टेस्ट देना होता है, तो इसके लिए हमें वीकेंड पे 5 से 6 घंटे 5 to 6 hours we need on weekend. It can be only Saturday, it can be only Sunday. If both the days you can give 6 hours, that would be great, right? So we need to go for a stream that can give us this much of time for CLAT. Okay, suggestions. Now a lot of you are going to ask for suggestions that okay fine, हमें समझ में आ गया कि इतना time देना है, but still discuss each and every stream. So number one, we are going to pick up medical or non-medical. Now if you're going for medical and non-medical and you're planning to give CLAT, then I'm assuming or I want you to keep one thing in mind, that you're not preparing for JEE or NEET, right? You're not preparing for the engineering or medical entrance exams, because if you're preparing, अगर आप दोनों के लिए, if you're preparing for JEE as well as CLAT, then things are going to get very difficult because JEE and NEET in themselves are very heavy exams, right? And CLAT is also, I won't say that is that heavy, but it is still a heavier exam. You need to give time, right? So I assume this, number one. Number two, taking for backup. Now if you're taking medical or non-medical, you're taking that, okay fine, if I am able to clear CLAT or if I get a good get admission in a good law school, then that's great. Otherwise I have this backup option. For example, if you want to become a pilot, or you are saying okay, I'll also go for NDA exam, and wherein you say okay, this stream is required, so I can go for it. And then you're not preparing for JEE NEET, but you are studying, you have taken medical or non-medical, you are just studying your NCERT normal books for the school exams and for the boards when in 12th, right? तो आप जो है नीट मेडिकल नॉन मेडिकल स्ट्रीम ले रहे हो, नीट जेईई के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, एक बैकअप ऑप्शन है उसके लिए आप ये ले रहे हो, ठीक है ना?
और आप अपना एनसीईआरटी नॉर्मल पढ़ोगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप सिर्फ लॉ की तैयारी करोगे या फिर जो लॉ जैसे एग्जाम्स है जिसमें करंट अफेयर्स आता है, रीजनिंग आता है, वो ठीक है ना, द सेम एग्जाम्स वेर इन यू जस्ट हैव टू स्टडी सम टॉपिक्स एक्स्ट्रा, नॉट द इंटायर थिंग इज डिफरेंट, राइट? सो moving on to commerce. Now there, why I don't want you to prepare for NEET and CLAT together, because it is going to lead, it is going to create chaos in your life, it is going to lead to a lot of confusion in your life, ठीक है? बहुत ज़्यादा confusion हो जाती है अगर आप दो बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो एक साथ, आपका स्कूल भी है, ट्यूशंस भी हैं, पागल हो जाओगे. So it is better that you plan before you jump into this scenario, and I'm already telling you because I've seen a lot of students doing this and they end up nowhere, right? Then comes commerce. Commerce, you have two options: with maths, without maths. Go for with maths only if you're too good at it and don't need a tuition, right? If you're good in maths and whatever your school teacher is going to teach, that is enough, and you don't need a separate tuition, then only go for commerce with maths. Otherwise, don't opt for it. And because I have a reason for that also, without maths, you can go for without maths, but do check economics of 12th and accountancy in general, because these are certain subjects, these are the two subjects when students say that we want extra help, so therefore we want to go to tuition. So if you're going to school in the morning, thereafter you have your 2 or 3 tuitions, when are you going to study? Because you have your homework from school, you have your tests going on in school, you have your homework from tuition, zero time for CLAT, right? So please plan that way, that can you study by yourself for accountancy and this. And if you are going for commerce, then I assume that you want to do BCom, like one thing that you're planning, that okay, BCom, again, backup options, like what is in your mind, is it just advocacy, or there's some other plan also that you want to keep? And keeping a backup plan is not at all a bad idea. I will leave a link of the video wherein I've talked about that if not CLAT, then what else. You should watch that video also. So yeah, keep things in mind that okay, if not CLAT, then what else I can do. If that's the scenario, then you can go for commerce. But again, accountancy and economics, you can just opt for one tuition, not for all the subjects. Okay, keep that in mind. Question: will taking maths as a subject in 11th and 12th help in CLAT preparation? Because CLAT also has maths. Yes, CLAT has maths, and the name of the section is quantitative techniques. Quantitative techniques consists of your basic maths plus data interpretation. This maths is based on whatever you've studied till 10th class: percentage, profit and loss, simple interest, compound interest, your surface area, volume, circles, whatever you've studied till 10th class, that the questions are based on your 10 till whatever you've studied till 10th class. And data interpretation is also on the easier side. We're going to discuss what is data interpretation and all that. So 11th and 12th class maths is not going to help, is of no help for CLAT, because a lot of students opt for math thinking that this maths is going to help you with your preparation for CLAT. No, it is not. I want to tell you that around 15 to 17 questions only are going to be there from maths. Maths में से सिर्फ 15 से 17 questions ही आएंगे, ठीक है ना? और आप उसके लिए एक सब्जेक्ट ले रहे हो 11 12 में, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है उसके लिए. उससे अच्छा ये है कि आप इस चीज़ की वजह से, लाइक थिंकिंग कि मैथ्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर क्लैट, don't go for maths as a subject in 12th. Otherwise, if you have some other reasons, you can go ahead and opt for this subject. Okay, talking about humanities or arts as we call it, humanities or arts में कौन सा subject? Now, humanities and arts, which subject? That would be your next question. I would say one subject that you should opt for sure is your legal studies, right? And the other subjects, you should go for the most easier subjects. Now, you'll say, which are the easier subjects? I would say like political science is easy. You can go for that. Sociology, and I might say political science is easy, but you should find it easy, not me, because you have to give the exams. So I would say that what you should do, NCERT का books download करो CBSE के website से and check करो. क्या check करो? Check करो कि क्या आपको ये subject easy लग रहा है या नहीं लग रहा, ये check करो. ठीक है. Now talking about legal studies, I want you to take legal studies as a subject, because number one, it is going to help you with your CLAT preparation, because a lot of clarity on law subject. ठीक है. Number two,
in the CUET exam, like there's this exam called CUET, on the basis of which you get admission in Delhi University in the courses like BA, BCom, BBA, and various other universities. One more reason that you should take legal studies as a subject, if you're considering, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहाँ पर आपको CUET का एग्जाम देना होता है. यू हैव टू गिव CUET's एग्जाम फॉर BA LLB, right? And you need to clear an entrance exam which is going to be based on your legal studies subject, right? So that is also, the option is open for you. Another thing I want to tell you is, please check out CUET exam, because in Delhi University, if you want to take admission in Delhi University BA, BCom, BBA, you need to know that what are the requirements for CUET, BA, BCom, BBA, because normally students treat this as their backup. So I've done a video already. You can check that out, that what are the requirements, which subjects are necessary, because they tell you that you need to have those subjects in your 12th. Like, it's mandatory that if you want to be eligible for this course, then this subject needs to be there with you in your 12th. For example, if you want to opt for BBA in Delhi University, mathematics is important. Like, you importantly mandatory, it is mandatory. So do check out that video also. So here, if you're going for humanities, go for it. Take legal studies as one of your subjects, and go for all other subjects as very easy subjects which you can study at school or you can study by yourself, and you don't need a tuition. You should not go for a subject for which you have to go for a tuition. Okay, should I go for coaching for CLAT, or is coaching necessary for CLAT? Now this is one question. Should I go for coaching for CLAT? Is coaching necessary for CLAT? Now I won't say that coaching is necessary for CLAT. I would say self-study is necessary. What is necessary is self-study. Nothing else is necessary. Self-study is necessary. तो अगर आप कोचिंग इसलिए ज्वाइन कर रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ कोचिंग ज्वाइन करके सब कुछ वही करवा देंगे, मुझे सेल्फ स्टडी नहीं करनी पड़ेगी, तो ये बहुत बड़ी भूल है, ठीक है ना. इफ यू आर थिंकिंग दैट ओनली कोचिंग इज गोइंग टू डू द जॉब, देन यू आर रॉन्ग. लेट मी करेक्ट यू. ओनली सेल्फ स्टडी इज गोइंग टू डू द जॉब. So coaching is not compulsory, it is not mandatory. You can clear CLAT without coaching. In fact, self-study is a much better option, right? How to decide? Check out the subjects and see if you can study by yourself. I'm going to share which subjects are there. I'm going to share the syllabus. Buy some books, 1 or 2 books, study by yourself. Try if you can study by yourself. And if you can, go ahead with self-study. Otherwise, you can opt for coaching. Again, I've done a video helping you out at how you can decide that for what you are made for, self-study or coaching. आप किसके लिए बने हो, self-study के लिए या coaching के लिए, उसके लिए video क्या है, link description box में मिल जाएगा. Next is trying studying by yourself. Okay, next is self study is mandatory. Okay, if going to coaching institute that only studying there is sufficient, then you are wrong. That I have already discussed with you. Thereafter, instead go for subject wise tuitions. If you can find local tuitions wherein a person is expert in one particular subject and you're weak in that subject, then you can go for those tuitions rather than joining coaching institutes, right? When should I start studying for CLAT 2024? When is the best time? When is the best time? Now. Now. Now is the best time. In 11th, if you start studying, the earlier you start, the better. Start in 11th class. Only aim should be that you complete your syllabus in 11th class. Why? Because in 12th, you have your board exams and that board ka pressure. Do you remember your 10th? Abhi 10th kara hai. That board ka pressure is very much. So school takes more, your school tends to take more exams, projects and everything, that burden of board exams. But if you're done with your syllabus in 11th, if you're done with your syllabus in your first year 2022, when you're in your 11th class, okay, if you're done with your syllabus, if you've completed the syllabus, that is notes, understanding, practicing questions, you're done with this, then in 2024 or 2023, whenever you have your exam, we are going to discuss the date of the exam, you just have to revise. You have to give mock tests are your sample papers. Then you have to find your weak topics, work on them, and current affairs, because that's an ongoing process. Current affairs करना पड़ेगा, मतलब you will be the boss. You will be the boss. No worry, because you're done with the syllabus. You're just working on to improve your score. This is the best time. This is the best time. Please. I repeated, yes, starting in 11th is the best time. If you are saying that you want to be an advocate, you know about CLAT exam in your 11th class, you are lucky, because many of the students get to know about this exam when they're in their 12th standard.
They have no option, some months only. But you know about this exam. Why don't you start your preparation right now? Minimum 3 hours a day. That's what I am asking from you. Nothing else. Not much. And thereafter, once you've completed the syllabus, you will be the boss. If you really want to take admission in the top NLUs or in some NLU also, start right now, please. How much time is required to complete the syllabus of CLAT? Now, this is a very genuine question. Look, depends on how much time you are going to study for CLAT every day. You can complete the syllabus in 1 month, some people do in 2 months, 3, 4, 5, 6. But if you say I'm going to give 2 to 3 hours, then even if very, very slowly you are studying, you will be able to cover the syllabus in 6 to 7 months, right? If you're giving this much of time, if you very slowly you're covering the syllabus, right? So this much time you need. Now you will say, okay, then I'll chill for another 3, 4 months and thereafter I'm going to begin. Let me tell you, firstly you're going to face some problems in the when you start preparing for the exam. So if you start early, you'll have that time to, you'll have that gap, that in case you're not able to understand things, you'll have that time to understand things and take a little more time than usual. So please start right now. When is CLAT 2024 going to happen? Now this is a very commonly asked question. So I want to tell you now, for example, 2022, okay, 2022 is going on. The exam is in June 2022, CLAT exam, okay. But for 2023, for the very first time ever, okay, the exam is happening in December 2022. Thereby, we can very easily conclude what? That our exam 2024 is either going to take place in December 2023 or May-June 2024. Right? Now, no one knows except the CLAT people that when the exam is going to happen. But yes, we can guess that it's either December 2023 or May-June 2024. Okay, a lot of you ask when is the registration going to begin. Look, the registration, whenever it begins, it is going to begin, 4 to 5 months before the exam. And I'm going to tell you here on Loggery that the registrations have begun. Go fill the form. So don't worry about that. Instead, study. Okay. Can I prepare for CLAT 2024 alongside school, or I need to take a drop year? Now, a lot of you think that you should take a drop year. No, you don't need to. Drop year मजाक नहीं है. Okay, it is very difficult to study when you take a drop. So yes, you can study for CLAT when you are in your school. With your 11th and 12th only you can prepare and crack CLAT. You don't need to take a drop year. No drop year. I've discussed with you that which streams you should opt for. Opt for those streams and you will be good to go. Right? You just need to take out 3 to 4 hours or 3 hours minimum for your CLAT preparation every day. And if you can do that, yes, you can prepare. Yes, students take out that much of time with their, school. So you can also take out that time. Okay, which other exams should I give? Now this is a very legit question. और कौन से exams हैं? तो आपके जो law entrance exams हैं वो होते हैं 5-year law entrance exams. क्या बोलते हैं इनको? 5 years law entrance exams. Now which are the exams that you can give? These are your ALET for NLU Delhi. Okay, then you have your SLAT, that is for Symbiosis Law School. Symbiosis Law School is in Pune, Hyderabad, Noida, Nagpur. Then you have your MHCT, that is for GLC Mumbai and ILS Pune. Then you have your NLAT, that is for your Narsi Monji, and that's in Navi Mumbai and Mumbai. और भी colleges हैं इनके. There are various other colleges, but the best one is Navi Mumbai and Mumbai. AILLAT is your Army Institute of Law, Mohali. Then you have your Christ University, Bangalore. Okay, these are the law schools, other other entrance exams that you can give. Okay, can I prepare for these exams alongside CLAT 2024? How? If yes, how? Yes, you can prepare for these exams. You need to set a priority. Now remember this one thing, that CLAT is on the difficult side. CLAT is on the difficult side when compared to other exams. Why? Because the format is such. We are going to discuss the format, but the topics are almost same. Some are same and some are different. So what you need to do, say you set a priority that okay, I want to clear CLAT. If not CLAT, then my second option is ALET. If not ALET, then I can go for SLAT.
maybe this is your priority, right? So first I'll complete the syllabus of CLAT. Thereafter I'll check out which are the topics, that extra topics I'll call them, which are the extra topics that I have to cover for ALET. And then after doing so, I'll see which are the extra topics for SLAT. And I'm going to tell you, by the time you reach SLAT, only one or two topics are going to be there for all the subjects, only one or two in entirety. So syllabus is almost the same. Yes, pattern is different. Yes, you need to know about the exams, and that I'm going to tell you. I'm going to leave the link of each of the videos for different exams that I've done. Check that out. But yes, most of the syllabus is same. Like if you study for 2 or 3 exams in the list, you are sorted for all the exams, that I can guarantee you, right? If we check out the question paper of CLAT, तो CLAT 2021 का अगर हम क्वेश्चन पेपर देखें तो वो कुछ ऐसा लगता है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस है, ठीक है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस है, उसके बाद क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो कि है www.logri.com, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो पैसेजेस पैसेजेस पैसेजेस, ठीक है ना। तो इंग्लिश में तो आपके पैसेजेस हैं ही, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप 5 पैसेजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है पार्ट बी, ठीक है ना। जो जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा करंट अफेयर्स है, ये रहा करंट अफेयर्स जो है। अगर हम करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज का पार्ट देखते हैं तो इसमें भी पैसेजेस हैं। तो पैसेजेस बहुत सारे हैं इस एग्जाम में, हर सेक्शन में पैसेजेस हैं, फिर क्वेश्चन है, फिर पैसेज है, फिर क्वेश्चन है, फिर पैसेज है, फिर क्वेश्चन है। देख रहे हो, पूरे एग्जाम में पैसेज और क्वेश्चंस ही है, मतलब पढ़ना बहुत पड़ेगा, रीडिंग बहुत करनी पड़ेगी इस एग्जाम के अंदर। जो क्लैट का एग्जाम है तो हम डिस्कस करेंगे। लीगल रीजनिंग है जो कि लॉ का आपका पेपर है, ठीक है ना। जो लॉ का सब सेक्शन है, ये लॉ का सेक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं कहीं पर आपको लॉ बताया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद उसमें से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है मतलब पेपर जो है आपका लेंदी है, और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना वो पहली बार पेपर देखते हैं एग्जाम में। मैं नहीं चाहती हूँ। देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ, ऑन द अदर मिस रिप्रेजेंटेशन फॉल्स इनटू 3 कैटेगरी, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ये सारा मतलब अगर लॉ आपने पहले से पढ़ा होगा थोड़ा सा तो आपको हेल्पफुल रहेगा। और रीडिंग में तो आप बहुत ही अच्छे होने चाहिए। देखिए मैं आपको धीरे धीरे सारा मतलब क्वेश्चन पेपर, लेट्स हैव अ लुक, कंप्लीट पेपर अगर मैं दिखाती हूँ, मैं दिखाना ही इसलिए चाहती हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन ही कॉम्प्रिहेंशन है। और देखिए कितने सारे कॉम्प्रिहेंशन हैं, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन आ गया, फिर पैसेजेस, फिर उसके बाद क्वेश्चंस, फिर पैसेज, फिर क्वेश्चन, फिर पैसेज, फिर क्वेश्चन। एंड में अगर हम मैथ्स देखेंगे तो पूरे पेपर मैथ्स के अंदर भी देखिए आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक स्टार्ट हो गया, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में भी पैसेज, फिर क्वेश्चंस, पैसेज, फिर क्वेश्चंस, पैसेज, फिर क्वेश्चंस, ठीक है। तो पूरा पेपर आपका ऐसा है, okay। When we have a look at the paper, what we learn, what we get to learn from the paper, what are the things that we have to keep in mind? Number one, we have to keep in mind the paper is lengthy because there are passages all over, passages all over, देखा हमने, there are passages all over, so the paper is lengthy, there are passages all over। what is necessary, what is necessary? Good reading speed, गुड कॉम्प्रिहेंशन स्पीड, कि आपको समझ में आए, कॉम्प्रिहेंडिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए बेस्ट चीज़ क्या है? गुड वोकैबुलरी ऑल्सो। क्या है बेस्ट? रीडिंग न्यूज़पेपर एवरी डे, रीडिंग द हिंदू इज मैंडेटरी अगर क्लैट क्लियर करना है। अभी से, आज से, जब से वीडियो देख रहे हो तब से पढ़ने लग जाओ। एग्जाम आए पे 6 to 7 की क्लास लगाने लग जाओ। अगर तब नहीं लगा सकते, आगे पीछे अगले दिन का शेड्यूल बना लो, बट ये क्लास ज़रूर देखो और खुद से भी न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करो। लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस बिकॉज यू नीड स्पीड। पैसेज पढ़ लिया, गुड कॉम्प्रिहेंशन स्पीड है, गुड सब कुछ है, तो पैसेज समझ में आएगा। अब फटाफट प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस सॉल्व करने की भी स्पीड होनी चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड, और वो क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व हो कि आंसर भी करेक्ट हो, बिकॉज तभी मार्क्स मिलेंगे, तभी पेपर क्लियर होगा, ठीक है। ये सीखने को मिलता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एंड जब 2022 का पेपर हो जाएगा, एनालिसिस होगा लॉगिरी पे, उसको देखना, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। लॉगिरी को भी और एग्जाम आयर को भी। जल्दी से पहले वीडियो को पॉज करो और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम। सो मैक्सिमम मार्क्स 150 hours, 2 hours time, the duration of the exam, 150 questions for 1 mark each. So one question is of 1 mark each, and there are 150 questions. Your paper is of
150 marks. Negative marking is of 0.25 marks, right? So if you attempt a wrong answer, 0.25 marks are going to be deducted. Marks distribution, this is another very important thing. Please make notes of the same. English language, 28 to 32 questions. Current affairs, 35 to 39 questions. Legal reasoning, 35 to 39 questions. Logical reasoning, 28 to 32 questions. Quantitative techniques, 13 to 17 questions. Now I want to tell you one biggest mistake that students make. Now, number one, your quantitative techniques is your maths plus data interpretation. We're going to talk in detail about this exam. हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. अब current affairs, your current affairs only has current events, questions from current events or questions from current events background, right? For example, Russia Ukraine war is going on, right? So they can ask you questions with regard to that or history. Maybe they dive into a little history, that what happened in 2014 when Crimea was taken over, right? What happened before that? What were the fights that took place? With regard to that event, they can ask you question. But in general, you don't need to learn history, geography, science, economics. No, that is not there. That we call static GK. You don't need to study static GK. Okay, remember that. The books normally that students go for is Lucens, Pearson's. No, you don't need to study static GK. Current affairs is what you need to study, and very clearly in the guidelines, CLAT has mentioned the same. Okay, let's discuss the syllabus and books that you need to buy for CLAT 2024. बात करेंगे कि legal aptitude, जिसको legal reasoning भी बोलते हैं, उसकी preparation कैसे करनी है. I'm going to give you the topics, the name of the topics. I'm going to tell you कौन सी books में से पढ़ना है. चलिए, आपका जो questions होते हैं वो ऐसे आते हैं, मतलब passage होता है, ठीक है ना, और उसके बाद followed by क्वेश्चंस, ठीक है. वो हम क्वेश्चन पेपर वाले पार्ट में देख ही चुके हैं, मैंने आपको दिखा दिया है. ये इन्होंने लॉ दिया हुआ है कि प्रिंसिपल एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या होती है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होती है, पॉल्यूटर पेस लायबिलिटी क्या होती है, ये सब बताया हुआ है यहाँ पर. हाउ टू स्टडी फॉर लीगल एप्टीट्यूड, हाउ टू स्टडी फॉर लीगल रीजनिंग फॉर क्लैट. This is for CLAT, right? Number one thing is that you have to understand basic legal topics and concepts. You have to understand. अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, हमने क्वेश्चन इकट्ठे देखा, उसमें क्या था? They have given you the law. They are telling you what is the law. They are not going to ask what is strict liability. They are not going to ask what is theft. No, they will give you the definition of strict liability. They will give you the definition of theft. What you have to do? You have to understand. What you have to do? You have to understand. This is what you have to do. You have to understanding basic legal topics and concepts. This is very important. You don't have to learn. For CLAT आपको याद नहीं करना है, याद करने से कुछ फायदा नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए. लॉ लीगल लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करेंगे? स्टेप वन हमारा क्या होगा? बेसिक लीगल टॉपिक्स पढ़ने होंगे. हमें क्या करना होगा? बेसिक लीगल टॉपिक्स जो हैं, वी हैव टू स्टडी दैट. नेक्स्ट थिंग इज टॉपिक्स कौन कौन से हमारे टॉपिक्स आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, एक्सेट्रा, right? So you have to cover your Indian constitution, you have to cover contracts, criminal law, torts, etc. Now the most important topic is Indian constitution for 2024 aspirants, because if you understand Indian constitution properly, it will help you with your understanding of the newspaper समझ में आने लग जाएगा अगर Indian constitution अच्छे से पढ़ ली, क्योंकि जितने procedures हैं सब समझ में आने लग जाएंगे. One of the best things that you can do is buy my course of Indian constitution, link is in the description box. Understanding में वो बहुत आपको हेल्प करेगा, ठीक है. बाकी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं. बुक जो है विली, LANLR बाय विली, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, गलत बुक मत खरीदना. उसके बाद जो मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, डोंट लर्न द लॉ, यू डोंट नीड टू लर्न द लॉ. कीप दिस इन माइंड, अंडरस्टैंडिंग शुड बी द एम. दिस इज योर फर्स्ट थिंग, अंडरस्टैंडिंग बेसिक लीगल टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स. एम क्या है? कि हमें लॉ लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज समझ में आने लग जाए, ये हमारा एम है, ठीक है. स्टेप टू क्या करना है? व्हाट इज आर स्टेप टू? स्टेप टू जो हमारा है वो है रीडिंग न्यूज़पेपर एंड अंडरस्टैंडिंग लीगल कॉन्सेप्ट्स. अब देखिए, वी आर नॉट श्योर, वी आर नॉट एट ऑल श्योर कि जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स,
क्रिमिनल लॉ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगे, क्योंकि ये बेसिक लॉ है, ये हमें लॉ समझ में हेल्प करेगा, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। टॉपिक्स हमारे कहीं से भी, वो कोई भी लॉ उठाकर डाल सकते हैं और चांसेस रहते हैं कि वो करंट उठाएं। ठीक है, चांसेस ये भी रहते हैं कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से आ जाए, क्योंकि आपका जो 2021 का एग्जाम था उसमें देखा गया था ज़्यादा फोकस इन्हीं टॉपिक्स पे था। बट आपको ये भी हो सकता है कि न्यूज़पेपर बेस्ड टॉपिक्स वो उठाएं, लीगल कॉन्सेप्ट्स वो उठाएं और उसमें से आपको क्वेश्चन डाल दें। उसके लिए क्या करें, उसकी अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले तो यू आर रीडिंग द हिंदू फॉर करंट अफेयर्स, यू आर रीडिंग द हिंदू, यू आर गोइंग टू रीड द हिंदू। तो द हिंदू के अंदर एग्जाम आर पे भी जो 6 to 7 में सेशन लेते हैं उसके अंदर आपका लीगल न्यूज़ अच्छे से हम समझ लेते हैं। ठीक है, अगर कंपाइलेशन में से पढ़ना है तो लॉ गिरी की जो लीगल न्यूज़ की वीडियोज़ आती हैं करंट अफेयर्स की, मंथ की 3 वीडियोज़ डालती हूँ मैं, वहाँ पे मैं आपको सब कुछ समझा देती हूँ, तो वहां से आप समझें। ठीक है ना, तो ये समझना है, याद नहीं करना, उस वीडियो में समझना है सब कुछ। अगर मैं बोल दूं हाँ क्लाट वाले भी याद कर लो, देन इट मीन्स कि मैं उसको याद करवा रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आ जाए, बट वैसे आपको समझना है। ठीक है, वो वीडियो में समझना है। स्टेप 3 क्या है, प्रैक्टिसिंग लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस। देखिए जो लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो हमें प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, अब क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ क्लैट एंड एलेट, वहां से आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या होगा क्वेश्चन, दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो लीगल रीजनिंग है इट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज देयर इन 20 एंड 21। यस बिकॉज 2020 में पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है, तो क्या चेंज हुआ, अगर आप 2020 के पहले वाले क्वेश्चन भी लीगल रीजनिंग के प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके जो रीसेंट, जो अब नए वाला पैटर्न है लीगल रीजनिंग का, वो भी आप सॉल्व कर पाओगे। क्यों, क्योंकि अब पहले वो क्या करते थे, वो लॉ क्लियर कट बता देते कि ये लॉ है, ये लो कर लो सॉल्व। अब क्या है, ये लॉ को वो पैराग्राफ में छुपा देते हैं, बस तुम्हें लॉ आइडेंटिफाई करना आ गया, लॉ पढ़ना आ गया, तो तुम नए क्या पुराने क्या कोई भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब इसको समझने के लिए कि रीजनिंग कैसे सॉल्व करनी है, लीगल रीजनिंग, मैंने एक वीडियो करा हुआ है, हाउ टू सॉल्व लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस बाय लॉगरी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो बहुत देख लेना, बहुत ही बेसिक वीडियो है, हेल्प करेगी। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, बाय अ बुक फ्रॉम अमेजोन से बुक बाय कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो बाय करो और वहां से सारे लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी। मतलब प्रैक्टिस जो हमारी है वो क्लैट और एलेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से करेंगे और फिर हम देखेंगे कोई और, पहले ये खत्म करना है अच्छे से। क्लियर है बात? लेट्स टॉक अबाउट जनरल नॉलेज और current affairs, how you have to study for your current affairs. Okay, how to study for general knowledge, that is your current affairs. Okay, for general knowledge, that is your current affairs. Step 1 is reading newspaper every day. Yes, you need to read the Hindu every day. You need to buy the e-subscription of the Hindu. You have to read the Delhi edition of the Hindu every day. This is mandatory. People are going to tell you, अरे मत पढ़ यार, मैगजीन में से पढ़ लियो, you don't need to know. This is mandatory for CLAT. This is mandatory, non-negotiable. Thereafter, now how can I help you? We post screenshots of important news articles from the Hindu on our Instagram handle, that is at @IamLoggery, and we also post the same thing on www.loggery.com. So wherever you find it convenient, you can go ahead and check out the important newspaper articles, because one major problem that students face is that they think that they have to read the entire newspaper. No, you don't have to read the entire newspaper. You only have to read the important articles. Only read important articles. That is what you are supposed to do, right? We explain the Hindu every day on our channel Examiner. Now, another initiative that we have started for you guys is that we explain the Hindu on my channel Examiner. The link of the channel is going to be in the description box, so you can go ahead and subscribe. There's a live class that happens 6 to 7 हर रोज live class होती है जिसमें द हिंदू मैं आपको explain करती हूँ, right? तो आप ये जरूरी नहीं है 6 to 7 ही आपने देखना है, वो लाइव होकर भी वो वीडियो वहां पर रहता है, सो यू कैन वॉच द वीडियो वेन एवर यू कैन ड्यूरिंग द डे. टुमारो ऑल्सो यू कैन वॉच, मे बी इन द मॉर्निंग यू कैन वॉच द वीडियो ऑफ द प्रीवियस डे, right? So that is what you can do. Problem, not able to understand the newspaper, what to do? I would say don't stop reading the newspaper. That is one recommendation that I give.
keep on reading the newspaper. If you're not able to understand, watch my sessions on Examire. You will, you what I do is I do the background research for you. So I explain you that this happened, then this happened. That's why this is the case. So you're able to relate. तो आप relate कर पाते हो क्योंकि मैं background समझा देती हूँ कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, ये हुआ था. तो वो सारी story जो है वो आपको समझ आ जाती है. Okay. Now, the next step two is reading a monthly current affairs magazine. Yes, newspaper के साथ you need to read a current affairs magazine, preferably Drishti IAS and IAS Vision because they give us a good background. Yes, they are lengthy, but because they do the good, the nice, the required background research for us, we need to read IAS Vision and the Drishti IAS, or anyone. Now, the difference between them is Drishti IAS gives you 2 editions per month and Vision gives you 1 edition. I would say check out both of them. जो भी अच्छा लगे वो पढ़ो. Whichever you like, you should go ahead with that. Step 3 is having notes to revise from. Now it's very important. One of the biggest mistakes students commit is that they don't have notes to revise from. Right? A lot of students don't have notes to revise from. If you think that you'll be able to learn current affairs by reading them just once, you're mistaken, my friend. You're mistaken. You need to revise again and again, and for revision you either need handwritten notes or treat current affairs magazine as your notes. Now the number one option that you have is you start making handwritten notes, and if you say I don't have the time, don't have time, or you say I don't know how to, or I can't be consistent, then don't make handwritten notes. Not compulsory, not mandatory. Then you can treat your current affairs magazine as your notes, but still continue reading the Hindu is very, very important. Very, very important. It is mandatory. Right? You've seen the question paper. You need to have a good reading speed, good understanding, good vocabulary, lots of practice. All you need. So newspaper is going to help you with a lot many things, with your reading comprehension, with your vocabulary. I also discuss the important words, meaning of the words. Right, mistakes. Now, following videos and not having printed or written source to revise from. Now, students, what they do is on YouTube or any other platform, they follow videos, but they don't have notes to revise from. So, having notes is very, very important. Studying GK from multiple sources. Now, what they do is they find one different, news piece and they go crazy. ठीक है, एक अलग न्यूज का आर्टिकल मिल जाएगा, उनको लगा अरे ये भी पढ़ना है. तो अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना, 80% न्यूज़ तो कवर हो गई, बाकी 20% न्यूज़ उसमें से इसमें से हो गया, IAS विजन दृष्टि IAS में से हो गया, इससे ज़्यादा नहीं करना. ये अच्छे से कर लो, बहुत है. ठीक है. विच ईयर और मंथ्स करंट अफेयर्स आर गोइंग टू बी देयर इन द एग्जाम. कौन से मंथ्स की. नाउ दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ड्यूरेशन. So for CLAT 2024, January 2023 till the month in which the exam happens. If the exam happens in December 2023, so be it. If it happens in May 2024, then till then you have to study the current affairs. Right? Should I read the newspaper of 2020? Now the next question is that because 2023 news is important for CLAT 2024, should I read the newspaper of 2024? Yes, yes. But why? Because it is very difficult to understand news. Understanding the news and the current affairs is a task. You have time to understand, then why waste it? Start now. Start reading the newspaper now. Start making notes, because now you will commit mistakes, but कुछ नहीं जाएगा because you don't need those notes. In 2024, in 2023 you will be a pro when it comes to reading newspaper. The early you begin with, the better it is. The news revolves around same basic topics. Yes, it revolves around same basic topics. So if you understand the basics right now, you are going to find it a cakewalk to read the newspaper in 2023. Mark my word. How to study for quantitative techniques. Now your quantitative techniques is your maths. Okay, and for maths you have to solve basic maths from this book called 30 Days Wonder by Ashton. The link is going to be in the description box. Step 2 is creating a formula list. What you need to create? A formula list. You need to create a formula list, right? And step 3 is solving data interpretation questions from this book called Olive Board book. Level 1 only. इस book में से सिर्फ और सिर्फ level 1 ही solve करना है. Pie chart. Which are the topics that you have to solve from Olive Board? These topics from Olive Board. Which are those topics that you have to solve? Pie chart, bar diagram, bar graph, tabular diagram, line graph. These are the 5 topics that you got to solve. Okay. Let's talk about English. किसके बारे में बात करेंगे? English के बारे में. Reading comprehension you need to cover.
passages, right? How to study for reading comprehension. Now, if you want to buy a book, look, Arun Sharma is a good book, but it is for CAT and the level is high. But yes, this book has good explanation. Okay. Understanding how different types of questions are to be solved, step 1. Step 2, now you know what, reading comprehension, yes, you have school में भी आपने solve किए होते हैं, you know, you have solved reading comprehensions in your papers, in your English paper at school, but these reading comprehensions are different. You need to understand what they're asking when they say what is the tone of the passage, what is the author assuming, what is this, what is that. You need to know how to solve these types of questions, and for that you have to read theory. Now I'm giving you two options. One is a paid option by Arun Sharma, and other one is a free option. You can get a free PDF on my website, that is www.loggery.com. Go to study material. There you'll find a PDF for English reading comprehension. Go ahead and study from there. Okay, applying theory by practicing questions. The next step is you've understood, आपने समझ लिया कैसे question solve करने. उसके बाद applying theory by practicing question. Practice is very very important, my friend, because you need speed. You need speed and you need that answer should be correct. Correct होंगे तभी marks मिलेंगे. स्पीड होगी तभी पेपर खत्म होगा और बाकी सारे सेक्शन सॉल्व कर पाओगे. इसलिए बहुत जरूरी है. व्हाट इज योर एम फॉर इंग्लिश? एम इज दैट यू आर एबल टू सॉल्व 5 RCs in 30 minutes. दिस इज व्हाट यू नीड टू प्रैक्टिस. दिस इज व्हाट यू नीड टू प्रैक्टिस. इतना स्पीड लेकर आना पड़ेगा. Okay, now you need to remember, you need to note down the length in your brain, length of the passages of CLAT, so that you can solve RCs from different sources, resources. One thing that you need to keep in your mind is that you have to keep the length of the RC in your mind so that you can solve RCs from different resources, right? So the length of the passage can be kept in mind. How will you get to know? Have a look. Go through the previous year question papers of CLAT 2020 and 2021 question papers, because before 2020 the pattern of CLAT was different. Before 2020 the pattern of CLAT was different. Topics were same but pattern was different. And before 2020 there were some topics that were there, used to be there in CLAT, but now they are not there. So that's why you need to know the syllabus of CLAT. Whatever I'm telling, I have analyzed the previous year question papers. That's why I'm telling you the topics. Okay, critical reasoning and logical reasoning. Now in critical reasoning you have these 4 topics: assumption, arguments, inference, conclusion, the stars. These are very very important. Now I want to tell you one thing, that these are the topics that you might not have read ever or might not have ever heard about. So you need to go for a good book. You can go for M.K. Pandey or Willy. M.K. Pandey can be your first basic book. Go through M.K. Pandey and then you can go to advanced book, that is Willy. सबसे बड़ा question, और वो सबसे बड़ा question क्या है? The how to begin the preparation is so confusing. कहाँ से prepare करें? आपने हमें syllabus सारा बता दिया कि ये topics हैं, ये books हैं, but अब ये तो है ही इतना सारा, हम start कहाँ से करें? देखो, नॉर्मली जो होता है हम ये बोलते हैं कि वीक टॉपिक से स्टार्ट करो, चलो वो अच्छे से हो जाएगा ये वो, बट क्योंकि आपके पास 2 years हैं, मैं आपको ये कहूँगी कि आप स्टार्ट करें. स्टार्ट विद द सब्जेक्ट दैट यू थिंक यू लाइक द मोस्ट, जिसके साथ आपको लग रहा है कि एफिनिटी है, प्यार आ रहा है जिस सब्जेक्ट पे, बिकॉज वी नीड टू फॉल इन लव विद क्लैट. तो इसलिए आप उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें. अगर आपको लगता है कि मुझे लॉ के बारे में पढ़ना है, कि मुझे फिर लगेगा कि हाँ मुझे बनना ही एडवोकेट है, इतना मज़ा आ रहा है वो सब्जेक्ट पढ़कर कि मैं लीगल एप्टीट्यूड से स्टार्ट करती हूँ. आपको लग रहा है नहीं मुझे लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना है, कुछ अलग से टॉपिक्स हैं ये मैं पहले ख़त्म कर देती हूँ. आपको लग रहा है नहीं मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, बिकॉज पैसेजेस जो है मुझे लग रहा है कि ये मैं कर पाऊंगी, तो मैं पहले ये कवर कर देती हूँ. ठीक है, करंट अफेयर्स तो आपका साथ साथ चलेगा, एवरीडे टॉपिक है, करंट अफेयर्स तो साथ साथ करने ही पड़ेंगे. ठीक है ना, तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे. मैथ्स के साथ अभी मत स्टार्ट करना, क्योंकि मैथ्स की जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत कम है, तो 3 में से कोई भी स्टार्ट कर सकते हो, लॉजिकल, लीगल, इंग्लिश, जो भी आपको स्टार्ट करना है, so that you fall in love with CLAT. remember you got to date CLAT for almost 2 years. 2 साल के लिए इसके साथ प्यार करना है. लॉ के साथ तो सारी उम्र का प्यार है. ठीक है ना, ये जो प्यार है लॉ के साथ, चलो हार्ट बना दो, आई लव लॉ, आई वांट टू बी एन एडवोकेट. ब्लैक कोट डालना है सबने, और ब्लैक कोट जो है उसके साथ साथ एक अच्छे लॉ स्कूल की डिग्री भी चाहिए, साथ में एक अच्छी नौकरी लेकर निकलनी है. ठीक है ना,
तो इफ़ यू हैव नो फेवरेट्स एंड फाइंड ऑल ऑफ देम द सेम, अगर आपको सब एक जैसे लग रहे हैं, आपका कोई फेवरेट नहीं है, बस मुझे पढ़ना है, मुझे तो एडवोकेट बनना है, सजेशंस दे दीजिए, तो मैं कहूँगी कि आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज एक टॉपिक और सारा सिलेबस आपका खत्म इंग्लिश का, बस फिगर्स ऑफ स्पीच आप अलग से पढ़ देंगे, उसके बाद लॉ पढ़ लीजिए, फिर लॉजिकल रीजनिंग पढ़ लीजिए, या आप यहाँ पे इंटरचेंज भी कर सकते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग पढ़ ली, लॉ बाद में पढ़ ली, ठीक है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो कि आपका मैथ्स और डाटा इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि ये कम मार्क्स का है तो ये थोड़ी बाद में करें, ठीक है ना। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं। अब बच्चे जो बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो सारी बुक्स एक साथ मंगवा लेते हैं, फिर उनको अपने ना स्टडी टेबल पे रख लेते हैं, फिर उनको देख देख के डरते हैं कि अरे मुझे ये सारी बुक्स पढ़नी है, ठीक है। तो वो करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप एक या दो सब्जेक्ट्स की ही बुक्स ऑर्डर करें, उनको पढ़ना स्टार्ट करें, बाकी की बुक्स आप बाद में भी खरीद सकते हो, ठीक है ना। तो सारी बुक्स एक साथ खरीद कर उसको बैठकर निहारने की कोई ज़रूरत नहीं है, दो सब्जेक्ट स्टार्ट करो और ट्राई करो कि उनको एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आप ख़त्म कर पाओ, ठीक है ना। अगर आपको क्लैट 2024 के लिए एक शेड्यूल चाहिए, मान लीजिए आप कह रहे हो कि हम जून या जुलाई से प्रिपरेशन, मेजॉरिटी ऑफ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, तो आप कमेंट डाउन कर दीजिए, आई विल गिव यू अ शेड्यूल ऑल्सो, ठीक है ना। बट ज़्यादा बुक्स मत मंगवाइए। अगर मंगवा भी रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं मुझे 1 ईयर के प्लान के लिए सॉर्टेड होना है, ठीक है ना। अगर 1 ईयर के प्लान के लिए सॉर्टेड होना है कि मेरा सिलेबस जो है मैं कितनी देर में कर पाऊंगी और उसके लिए मुझे बुक्स देखने, तो ये भी एक अच्छा आइडिया है। तो उसके लिए फिर आप सारी बुक्स बाहर अपने टेबल पे ना रखें, क्योंकि वो आपको डराएंगी, ठीक है ना, और पढ़ने नहीं देंगी। तो क्या करें, जो बुक्स पढ़नी है वो ही अपने स्टडी टेबल पे रखें, बाकी अलमारी में रख दें, ठीक है ना। हाँ, तो शेड्यूल बनाने के लिए नो डाउट आपको बुक्स चाहिए। अगर आप कह रहे हो कि मतलब ये जो डर है ना, फियर है, इसको मैं मोटिवेशन में कन्वर्ट कर लूंगी कि भाई इतनी सारी किताबें पढ़नी है, टाइम वेस्ट नहीं करना, तो अगर वो वाला चीज कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना। और अगर डरते रहोगे और नहीं पढ़ोगे तो फिर 2 बुक्स ही ऑर्डर करना, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू स्टार्ट मतलब what should I do after watching this video, what should be my first step. Your step number 1 should be to note down the syllabus. Setting up a planner is very, very important. Now, what is a planner? A notebook, a good notebook, right? A good notebook wherein you name it a planner and you note down the syllabus. What is the syllabus? You note down each and every section name followed by the topics and the books. इतना कर सकते हो। बुक्स के अंदर इफ यू हैव कंफ्यूजन विच बुक टू बाय, इफ आई हैव गिवन ऑप्शंस यू आर नॉट एबल टू चूज, देन यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम देयर बाय द नेम @IamLawKiri। बहुत कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, गाइडेंस चाहिए, तो येस यू नीड टू पे फॉर इट। आप मेरा पेड सेशन ले सकते हैं जो कि सिर्फ 2000 रुपीज़ का है। उसके अंदर मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ बैठती हूँ, हम 1 से 2 घंटे बात करते हैं, आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, आपको बताती हूँ टाइम टेबल कैसे बनाना है, ये करना है वो करना है, जो भी सोल्यूशंस होते हैं आपको मैं वो देती हूँ, राइट। अगर आप मेरा सेशन बाय कर सकते हैं और फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो बहुत ही बढ़िया होगा। ये नॉर्मली मैं नहीं बोलती हूँ कि मेरा सेशन बाय करो, बट आज मैं बोल रही हूँ बिकॉज अगर 2024 वाला बच्चा ना एक सही स्टार्ट दे देगा अपनी प्रिपरेशन को तो बहुत बढ़िया होगा, राइट। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यस पेड सेशन है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। बट अगर आपको सब समझ में आ रहा है इस वीडियो से तो बहुत बढ़िया बात है, फिर पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं, @IamLawKiri से पे मैसेज कर दीजिए कौन सी बुक, तो मैं बता दूंगी, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ करनी है वो करनी है ऑर्डर 1 और 2 बुक्स एंड स्टार्ट स्टडिंग। देखिए बहुत बच्चे जो हैं वो दोबारा बता रही हूँ कि डर जाते हैं, तो या तो सभी बुक्स ऑर्डर करके अलमारी में रख देना, जो पढ़नी है वो बाहर रखना, ठीक है ना, ये कर सकते हो। उसके बाद गोल्स सेट करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। टाइम टेबल होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक हम स्कूल में थे तो कौन टाइम टेबल बना रहा था? हमारी टीचर्स, है ना, टीचर्स बना रही थी ना टाइम टेबल। वो डिसाइड कर रही थी कि इस डेट तक ये सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, ये वाला टॉपिक इस डेट तक खत्म होना चाहिए, होता है ना। फिर टीचर्स जो है वो एक्स्ट्रा टाइम भी लेती है, हमारा पीटी का पीरियड ले लेती तुम्हारे साथ होता था तो यस लिख दो, चार्ट सेक्शन में ले लेती थी ना कि भाई सिलेबस खत्म करना है ना, क्योंकि उनकी डेडलाइंस होती हैं। क्या होती है? उनकी डेडलाइंस होती हैं, तो तुम्हारी भी तो डेडलाइंस होनी चाहिए ना। तो वो डेडलाइंस कैसे आएंगी? जब टाइम टेबल बनाओगे। टाइम टेबल क्या क्या होना चाहिए? मंथली, मंथली की इस मंथ में ये टॉपिक्स खत्म हो जाने चाहिए, ठीक है ना। वीकली कि ये मंथ के अंदर ये टॉपिक्स, इस वीक में ये टॉपिक्स, फिर दिन का डेली कि आज मैं इस टॉपिक में से ये वाला सब टॉपिक पढ़ दूंगी, ठीक है ना, ये वाले क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस कर दूंगी। तो ये प्लानिंग ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लानिंग करनी कैसे है ये ऑलरेडी बताया हुआ है, वीडियो करी हुई है डिटेल में। 2 वीडियोस ज़रूर देख लेना प्लानिंग से रिलेटेड, ज़्यादा 3 लिंक होगा। एक मेरे दूसरे चैनल पे है हाउ टू स्टार्ट अ जर्नल, हाउ टू स्टार्ट अ प्लानर, ठीक है। एक मैंने क्या हाउ टू मेक अ शेड्यूल, और एक हाउ टू स्टडी फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। तीनों ही वीडियोस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप 2024 के एस्पिरेंट्स हैं, थोड़ी सी अगर आप मेरी 10-15 वीडियोस देख लेंगे ना तो आपकी बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। बिल्कुल फ्री में है ये वीडियोस, कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं आपको। हैव फिक्स स्लॉट्स फॉर क्लैट प्रेप, ठीक है। अब जब शेड्यूल बना रहे हो तो प्रेपरेशन के स्लॉट्स होने चाहिए। मान लो आप 7 o'clock स्कूल के लिए निकलते हो, ठीक है ना, तैयार होकर सब कुछ 6 से 7 आप तैयार होते हो, ठीक है। तो आप कह रहे हो सुबह 5 to 6 में एक स्लॉट निकाल सकती हूँ क्लैट के लिए, ठीक है। मे बी जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगता हो वो पढ़ रहे हो, या बहुत बच्चों का शेड्यूल ये होता है कि 5 to 6 वो क्या करते हैं कि सुबह उठकर मेरी जो पिछले दिन की एग्जाम आयर के न्यूज़ एनालिसिस होते हैं ना वो देख लेते हैं, न्यूज़ एनालिसिस देख लेते हैं पिछले दिन का, ठीक है ना। वो शाम को कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता, हम अगले दिन देख लेंगे, मतलब एक दिन पीछे चलते हैं न्यूज़ के। बट वो फिर जो शाम वाला मैं एनालिसिस लाइव करती हूँ 6 से 7, वो सुबह उठकर 5 से 6 देख लेते हैं, उसके नोट्स बना लेते हैं और फिर स्कूल चले जाते हैं, ठीक है। स्कूल चले गए, स्कूल से वापस आ गए, अपना होमवर्क किया, रेस्ट किया, ये किया वो किया। उसके बाद वो कहते हैं कि दी अब हमारे पास 7 o'clock या 6 o'clock हम फ्री हो गए, ठीक है ना। अब हमारे पास पूरा टाइम हम क्लैट को दे सकते हैं, हमने होमवर्क भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, ये क्लैट टाइम है, ठीक है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं 6 to 8 वो कहते हैं कि हम एक सेशन देंगे, 8 to 9 हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, और फिर 9 to 10 या 9 to 11 तक भी हम पढ़ लेंगे। तो आपको फिक्स करने हैं स्लॉट कि ये वाला टाइम तो मैं क्लैट के लिए ही दूंगी, ये वाला टाइम मेरा क्लैट के लिए है। अगर आप टाइम फिक्स कर देंगे तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है, प्रोबेबली ये है कि बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे, अगर आप एक टाइम फिक्स कर देते हो तो क्या होगा स्लॉट फिक्स करने से कि आप मिस आउट नहीं करोगे क्लैट की प्रेपरेशन पे जो हर रोज़ आपको पढ़ना है। तो फिक्स योर स्लॉट्स, ठीक है ना। एक साथ 4 घंटे भी दे सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट करके भी दे सकते हो, जैसे मर्जी, ठीक है ना। अब 3 आवर्स के अंदर 1 आवर तो न्यूज़पेपर को देना है। अगर एनालिसिस सुन रहे हो तो एनालिसिस सुन लो, अगर खुद से पढ़ सकते हो तो उसके जैसी कोई बात नहीं हो सकती। अगर दोनों करना है कि एनालिसिस भी खुद सुनना है और खुद से भी पढ़ना है, तो वो तो और भी बढ़िया बात है कि एनालिसिस भी सुन लो एंड स्टडिंग योरसेल्फ ऑल्सो। अगर स्टडिंग योरसेल्फ है तो यहाँ पे मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं न्यूज़पेपर में से, और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आपके लिए इंस्टाग्राम पे दैट इज @IamLogri पे पोस्ट करती हूँ, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर दोनों कर सकते हैं कि एनालिसिस भी पढ़ लिया और स्टडी योरसेल्फ भी कर लिया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। खुद से आप पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर अगर स्कूल लेकर जा सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, कि उस टाइम में जहाँ पर भी टाइम मिला तो पढ़ लिया थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो बहुत बढ़िया बात है, राइट। 2 आवर्स आप दीजिए कोई भी एक टॉपिक को, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो 2 घंटे दे रहे हो उसमें सारा का सारा टॉपिक एक बार में खत्म हो जाए, थोड़ा सा जितना भी आप 3 to 4-5 पेजेस पढ़ सकते हो वो पढ़ो, ठीक है। अगर आप 2 घंटे में एक, कई बच्चे होते हैं, अब मान लीजिए 2 आवर्स दे दिए मैंने आपको, अब एक बच्चा होगा वो 2 घंटे एक ही सब्जेक्ट पढ़ेगा, ओनली वन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वन ओनली, ठीक है ना। अब कई बच्चे होंगे वो कहेंगे हम तो जी बोर हो जाते हैं, तो 1 आवर वो एक सब्जेक्ट को देंगे और 1 आवर वो सब्जेक्ट नंबर 2 को देंगे। तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे सही है, कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि ऐसे ही पढ़ोगे तब होगा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसे आपको लगता है वैसे पढ़ो, बस पढ़ना है, ठीक है। So guys, that's it for today's video. I hope you found this video helpful. If you did, then please like this video and subscribe to the channel. मैं आपकी और कैसे हेल्प कर सकती हूँ comment down below. I read your comments and आप मेरे साथ mentorship प्रोग्राम भी साइन अप कर सकते हो। mentorship प्रोग्राम्स की जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आप 2 years का mentorship प्रोग्राम ले सकते हो, 1 year का mentorship प्रोग्राम ले सकते हो, मंथ ऑन मंथ mentorship प्रोग्राम ले सकते हो। कुछ और नहीं तो आप 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो, जो मैं आपको रेकमेंड भी करूंगी एज ए क्लैट 2024 एस्पिरेंट। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। एंड या प्लीज़ आप मेरे से इंस्टाग्राम पे बात करिए, वहाँ पे भी हम चैट कर सकते हैं। अगर बात करनी है तो पे करना पड़ेगा, चैटिंग इज़ फ्री, राइट। कमेंट करिए कि आपकी कैसे मैं हेल्प कर सकती हूँ, कौन सी वीडियो है जो आनी चाहिए 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए, राइट। और लॉगरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज हम और भी वीडियोज़ लेकर आएंगे 2024 एस्पिरेंट्स के लिए, राइट। सो अलाउ अस टू बी अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, राइट। सो दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना एंड ट्राई कि जो भी मैंने वीडियोस मेंशन करी हैं वो वीडियोस आप देखें, बिकॉज वो सचमुच आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और मुझे थैंक्स करना मत भूलना इन द कमेंट्स, राइट डाउन थैंक्स एंड ऑल्सो राइट डाउन एन अफर्मेशन manifestation that I'm going to clear CLAT 2024 and get into the best NLU because I am a Logarian. Okay, bye bye, take care.